The title of this session is The Way Forward. And the purpose of this particular session is that what do we do after this conference gets over, which will be happening tomorrow, and what kind of things we think we can achieve over the next 9 to 12 months, so that this particular conference is not just a talk shop, but something actually substantial comes out of it. We had taken this type of an initiative for the first time last year. The overall socio-cultural climate of the country was a little different. But we still said that we will keep it as a Hindu educational conference. You know, there were lots of arguments, discussions, contrary opinions that you should make it Indian conference or Dharma conference. But we had a very clear idea that this word Hindu is a problematic word. And because it is problematic, so we'll keep it as a Hindu conference. So that was there. Because there's a lot of resistance to the word Hindu, not only by people who do not like the word, but because so much of information or disinformation has been fed into our minds that sometimes even we ourselves find it uncomfortable to use this word Hindu in public space. There are three terms: Hindu, Hinduism, Hindu Dharma, and Hindutva. These four terms are there. And each of these words has a specific meaning, a specific context. But the Hindu word is an overarching word. It's a civilizational word. So when I talk about the term Hindu, it is not just about a small puja or some ritual. But as a Hindu, I should have an opinion on economy. As a Hindu, I should have an opinion on education. And when I talk about education, it should not be just restricted to what we discussed this morning about type A or type B, Paravidya, Aparavidya. But a Hindu has a comprehensive view of things. I think Swamiji also mentioned this. So there is a comprehensive view of things. We have to make a living, and we also have to become virtuous. And as a Hindu, I have to figure out how to balance these two in context of the education system. So that was one reason we called this a Hindu education conference. The second reason why we called this as a Hindu education conference was, see, there are Christian institutions. They are run by Christian bodies. I myself, when I was going through schooling, I went through St. Xavier School in Jaipur. It was a pretty good school. I think they did a good job in terms of giving me this one type of Vidya. And they never hesitate to hide the Christian identity. They never have. But that does not mean that they don't educate non-Christians. So that idea that I can be a Hindu institution, but there is nothing which stops me from providing education to a Christian, a Muslim, an atheist, and so on and so forth. So again, that hesitation we have to get rid of ourselves. I mean, I'm not bothered कि दूसरे लोग क्या कहते हैं. We have to correct our own distortions. And the third reason is, if there's a Christian institution, a lot of times when we approached a lot of educational organizations, and we said, sir, this is a Hindu educational conference. And we anticipated this question, that they will ask us, that why are you calling it a Hindu educational conference? You call it Indian, you call it Bharatiya. Bharatiya is a little bit more problematic than Indian. Indian is least problematic. Human is the least, there is no problem with human. Then Indian, then Bharat, and Hindu is there's a significant problem if you try to use the word Hindu. So one of the answers which we gave was, sir, you are running an institution. If you are a Christian organization, the government of India rules, regular rules, related to education. And Dr. Vishwanathan can correct me. They don't apply to you. The minorities have a separate set, there are separate rules which govern in minority institutions. If you are a Muslim organization and you are running an institution, there's no problem. There's another set of rules which governs. So who is left which is being governed by national, so-called national, rules? Who is left?
by process of elimination. Only Hindu organizations are being governed by these so-called national rules. So, non-minorities, हाँ. तो वो नेति नेति वाला जो प्रिंसिपल है वो इन इंस्टीट्यूशंस में भी लगता है कि ये नहीं है वो नहीं है इसलिए हम हिंदू हैं. So I just wanted to provide a context that why are we doing this. So this was one that we wanted to get rid of this idea that Hindu it should be used in a public platform in contexts just beyond puja, rituals, and yagya and all these things which we traditionally associate with. And because we are Hindu organizations, there has to be a platform where we can come together regularly, share thoughts, share ideas, figure out ways to collaborate at my local level, at the state level, and at the national level. And today, it was very gratifying to see that there are several delegations from outside the country, so at an international level. So that I just wanted to provide that backdrop. In last 1.5 days of discussions, the way I look at it and the way based on my interactions, 4 major themes have emerged. The first theme is that our curricula, and curricula, by the curricula, I just don't mean, value education. Again, we are confining it into a very narrow bracket. कि भाई value education होनी चाहिए तो Hindu education system. नहीं, we should be able to provide the best science-related education as a Hindu institution. Our institutions should be able to provide best education in area of engineering, medicine, humanities, arts, crafts, liberal, whatever, and value, So there's a significant need of curricular innovation. The second important area which is lacking is of policy. Now, there are several thoughts. Some people think that private institutions are the cure-all for all this challenge. There are other thoughts that government has to remain involved. But if you talk to anyone, regardless of what this ideological persuasion is, there is one clarity which is pretty evident, that as of now, we need a significant policy restructuring in area of education, how educational institutions are managed, how they are governed, how they are evaluated. So that is the second area, that we need innovation in area of policy. We need innovation in area of curricula, we need innovation in area of policy. And the third area where we require innovation is in area of quality. I have been teaching in an academic institution since last 5 years, and my input, incoming students at graduate levels are coming from a lot of places, and I can very clearly see that they are coming at not a desired quality level because the teachers they are getting, they are not at the desired quality level. So we need a very smart way, this is a country of 120 crores. We need a very smart way that in 5-10 year time frame, the quality of this whole teaching community in this country should come up to at least a decent level. If not necessarily at an international level, at least at the national level, it should be at a decent level. So that is the third area. So in this context, that is why I have requested, and these gentlemen, they have kindly consented that we will constitute a core group, right? And Professor Kapil Kapoor will answer, with your permission. He'll tell us a little bit about curricular innovation, and then maybe also we'll figure out a roadmap that what do we have to do, A, B, C, D, E steps. And then Professor Dr. Vishwanathan, he's Chancellor of Vellore Institute of Technology. We have visited his institute. And it's a very nicely laid out institute, very high quality education, very transparent procedures. So he and others will work in area of policy. And again, he'll spell out in 5-10 minutes some overall scheme of what we plan to do, and then how do we take it to the next logical step. In area of quality, I have requested Professor Shiban Kak. He had to catch a flight, so he could not. So I will fill in his space for the interim. So that is one. And then one additional area which came out today was Sanskrit. Okay? So there were several individuals, passionate lovers of Sanskrit,
and they discussed it among themselves. And what they have related to me is that we don't need necessarily money from the government, but we want that the government should, relax. If some institution wants to teach Sanskrit in a particular way, there should not be any complicated procedures. Actually, there should not be any procedure. If someone wants to, so how do we craft our policies at national level and state level so that Sanskrit teaching becomes effective and widespread across the whole country? So with this overall roadmap, what I will request one by one, I'll request these three gentlemen to talk in 5 to 7 minutes in each of their respective areas, and then we will have one overall conclusion. So I will start with Dr. Vishwanathan on the policy front. In the 5 sessions, we have almost had a SWOT analysis of our educational system. What is our strength? What is our weakness? What are the opportunities? And what are the threats? I think we didn't discuss specifically on 2 points. One is how to make our country a global center for higher education. I don't know how many of you will agree, rightly or wrongly, we have inherited English language. There are more than 100 countries where they want to study English and go to UK, USA, Canada, and Australia. They can easily come to our country because they can spend only 20% or 30% of what they spend in these countries and get same education or better education in English. Sometimes I feel we are better than the Americans and even the British. Only thing is, it's slowly going down the quality of teaching. That's a different question. How is it that we can do this? That's one point probably we didn't pay our attention. I want you to concentrate that also. The other thing is, of course, we were finding fault, some of us finding fault with government institutions, some of us finding fault with private institutions. But whatever we want this country to do, ultimately it has to happen in the classrooms. Now we have a new government under Honorable Prime Minister Narendra Modi has taken over. And we want a governance system where corruption could be eradicated. No unaccounted money should play a place. And I want the educational institution to be a model in this. Is it possible in our country to do this? I've been running this institution for the last 30 years. This year we are celebrating 30 years. But still, I am afraid to start a medical college because we don't take cash in VIT. But when I inquired our people, our friends who are running medical colleges, they say it is not possible to run a medical college without taking or without paying cash. How are we going to tackle this problem? This is a problem facing the entire country. And so much shortage. We require number of doctors according to WHO, and only 1/3 of them is available in the country. And it's perpetual scarcity, a man-made scarcity. We have to suggest something to the new government that our students must be able to study medicine in our own country. We need not spend billions of dollars in US or in other countries like Eastern Europe or former Soviet Union countries. We are in a nation-building activity. And how far we are encouraged by the local authorities, state governments, central government organizations, regulatory bodies, I have been a witness. Of course, I was in the ruling party. I was in opposition. Now I'm out of politics as a citizen. I see from all angles. They think that all the private is making money and they should have a share of it. Officials, politicians, all put together.
And how are we going to solve this problem? At least we have 25-30% of institutions were very good. We can call them even excellent. And only about 10% or 20% are not up to the mark. The rest of them, we can call them good. But so far, I find, as far as the higher education system is concerned, UGC is not doing anything to encourage the private sector. Even the government, the state government universities, they don't get anything except 2-3 crores in a year. Tiwari ji is in the IIT. Of course, they are the blue-eyed boys of the government of India, government of Bharat. They get 300 to 400 crores a year. We have no complaints because they are the prestige of this country. They have to be given. But at 25%, 10% of that can be given to good universities, because we are lagging behind in research. And research, it's not possible for private institutions to allot enough money for research projects. Government has to step in, and only then we will be able to compete with the US. Now China is coming up, Korea is coming up, Japan is already doing well, Israel is doing well. We have to compete with them. These are the areas where we have to concentrate. And unfortunately, we could not attach much importance to school education in our discussion. On Children's Day, November 14th, I was invited to a government school in Vellore town, Vellore city. That is, they have classes up to 8th. They'll give you a gist of what happened. I asked the headmistress, what do you want for this school? I wanted to do something. She said, I want a smart classroom. I asked her, how many classrooms do you have? She said, only 2 halls where all the 8 classes are taught. There is no classroom at all. And I found all the students are sitting on the floor. I asked her, why can't you provide benches? They say, all over the city it is like this. They sit on the floor. And we are trying to improve the flooring. To sit on the floor, they want to improve the flooring. Now they have cement. They want to put some tiles, etc., so that the children can comfortably sit on the floor. This is the kind of education we offer. We can't even have a classroom. There are no benches to sit. It happens in many government institutions. And in school education, we are lagging so much behind. Unless we improve our school education, our higher education system will not improve. At least some of you would have gone through this report. In 2009, it was produced for OECD countries. It's called PISA, Program for International Student Assessment. It is originally meant for OECD, 34 OECD countries. Other countries also joined. We also wanted to join. India, our country, was represented by Tamil Nadu in the south and Himachal Pradesh in the north. Ultimately, what happened, when there was ranking, out of these 73 countries, we were second from bottom. 72 out of 73. The only country behind us was Kyrgyzstan. That is how we are doing in school education. So far, I have never seen anybody discussing at parliament or assemblies about this report and what is to be done. This is another factor I want this conference to look into and make suggestions to the government. There are many areas, of course, our friends are going to discuss with you. The minister has announced that she is going to have a new education policy in the new year, in 2015. And it is time now that we concentrate on all these issues. One issue we did not discuss here was the affiliating system. All of us know that the affiliating system does not exist outside the Indian and the subcontinent. Only in our country, Pakistan, Bangladesh, we have this system. All over the world, either they have universities or colleges which are not universities. Having understood the problem, in the 10th plan, it was decided to give autonomous status to 10% of the affiliated colleges in this country. By the time at least 4,000 colleges should have been autonomous,
it is only 400 in number. What we have decided, we have not implemented, and we are not capable of asking why it is not being implemented. This is the situation as far as education is concerned. And the educational institutions are afraid even to ask for autonomy. And whatever is there, they are trying to take it away. So I'm not going into the details, but it is happening. It's not only for government institution, the private institution, even for government. I was in the board of management of a government institution, and they can't even advertise for professors without getting the undersecretary or deputy secretary's permission from Delhi. This is the situation. Government institutions also, they are not enjoying any autonomy except the IITs and IIM. None of them have autonomy, real autonomy. And that's where we want the institutions to be given enough autonomous status so that they will be on their own, and ultimately they will be held responsible for the public by the accreditation system. That's what is available in US. There is no UGC there is no AICTE, there is no medical council, there is no pharmacy council, there is no bar council, yet they are number one in the world. How is it possible? Can we, with some modifications, can we adopt that system, and whatever we require, we can modify? These are the things I wanted to put before you. And with the core committee is being formed, we will get all your views and finally come to a conclusion and submit a report to the government. I would like to thank Professor Tiwari for having given me this opportunity. Thank you very much. Sir, may I request if we can have some approximate time frame that we'll have the first meeting of this core committee in December or January or something, so that we can... Okay, so it's December first week, so we'll communicate to all the... Not this first week, maybe something closer to last part of December, something like second, third week, okay. I don't want to lose time. Okay, understood. Yes, sir. Yes, sir, we will have that. We will have that. Absolutely. Yes, yes, sir. So what I plan to do is we will have all the three gentlemen come and speak for some time, then maybe another 5-10 minutes for Q&A, and then something with, because it also says concluding remarks. So we have, yes, yes, absolutely. So the way this is going to work out is that all the attendees who are there in this particular conference, we will, through email, we will inform. And we will develop some core groups purely on your interest, but also on your experience. See, I may be interested in nuclear physics, but if I go in there, that particular area, I will not be able to contribute productively. Yes, sir. Yes. Sir. So that is one. So now, next I will request Professor Kapil Kapoor to talk about curricula innovation, some broad contours. Why he's also right now involved, he's a member of a 3-member University Grants Commission committee, which has been charged with the responsibility of restructuring the whole University Grants Commission. So he has, so he'll share his. Namaskar ji. Thank you very much, Nachiketa ji. I understand that I think we should be bulleting things rather than giving much detail, and the specific subject curricula. I think I made some points in the morning also, but I will now take one by one. Number one, I think the focus is that we have to Indianize. Let me say that the tinkering with education, do this, or, innovating some things into that will not work. In my opinion, मूल चूल परिवर्तन होना चाहिए. The education system itself needs to be replaced in various ways. We'll not go into all the details. Now, in Indian eyes, I said 4 things in the morning. Education is neither Indian, nor democratic, nor federal, nor vernacular. So when you Indianize, now I'll take that is the driver for curriculum. Indianizing the education. That is driver. First of all, in curriculum, we have to now add new disciplines. All the disciplines in mostly our universities, they were borrowed from the British system, and at that time, Britain did not have religious education, so we don't have religious education.
even today. Now they have religious education, we don't have. So I think along this line, people can think we need to add new disciplines, not only from our own traditional knowledge, but also contemporary knowledge. So that is one thing which your committee should think about. And secondly, in each discipline, in each pedagogical framework, there are reading materials, prescribed reading materials, reading teaching materials. And as some gentleman had pointed out in the morning, that our students, they feel that all knowledge was created in the West, because no Indian thinker, no Indian text figures in any prescribed. Briefly, I'll give you example. I was in the committees which examined the philosophy and history syllabi all over the country. And philosophy, we found, if it was an 8 MA philosophy program, 7 dealt with Western philosophy, and in the 8s, half of it was comparison between Indian and Western philosophy. And generally the question was compare Atma and soul. And that is the end of it. Now, if you examine the syllabi outside, for example, France, if there are 8 courses, all the 7 are French philosophy, and there is one course which is option. You take Greek philosophy, you take Roman philosophy, Indian philosophy, whatever. So that is one thing. Syllabi in each discipline, the content needs to be revised to make it Indian. By Indian, I entirely agree with Nachiketa ji. It's neither only spirituality or value system. It's hard science. And I'm using the word science in the European sense, not in the Anglo-American, because they have science of music, they have science of painting. So it has to be hard science. And I need not point it out that we have the world's only continuous cumulative textual tradition in most disciplines. Continuous. Only problem is that since we are not taught and we don't study, we don't know. So there will be no dearth of textual materials. That's one. And secondly, and I don't say that we exclude, because my friend Rajni said, Bhartrihari says, what does one know who knows only his own tradition? The mind acquires critical acumen by interacting with other traditions. So we never argue that exclude Western thought. We say provide level ground to your students and give them Indian thought also. So that is the idea of textual content modification in all disciplines. Reality-based. Disciplinary formation should be reality-based. For example, today, large number of unorganized youth are employed in what will be classified as crafts, bangle making, etc. Even the motor mechanic, you see the motor mechanic, not engineer. The automobile engineer may not be able to solve your problem, but the mechanic on the roadside will start your car. Now, those crafts which provide employment at such a large scale should be part of at least ITIs, if not IITs. So that way, reality-based. And as for the arts, in arts, dance, music, drama, we have such powerful tradition and we have such a traditional, powerful role of the arts, because our learned thought, how somebody talked about disseminating it. The task is, how do you disseminate Indian knowledge? Indian knowledge has always been disseminated by 2 mechanisms for thousands of years. One is the Katha Pravachan Parampara, Katha Pravachana. And even today you have it. You start channels in the morning. You have people, somebody speaking on Kathopanishada, somebody on this, somebody on that. And second mechanism has been the arts, drama, music. If you have the Bharatanatyam dancers, you see, they dance your, like Dashavataras.
So the Dashavatara concept from Kurma to Matsya, almost evolutionary concept, this is disseminated to the people through dances, through music. And I feel that arts should be integrated with all disciplines, including sciences. A student of science, student of engineering, also should be given courses in dance, music, and drama, Indian dance, music, and drama. Yesterday I pointed out the Rig Veda is in Chanda, and Guru Granth Sahib is in Ragas. You see the musical tradition, it is imbricated with our intellectual tradition. These are both intellectual texts of Indian Sanatana Dharma Parampara, and they are metrical. So I think these should be integrated. I forget a lady, great dancer. She was there the other day in a meeting. She says, wonderful, you are discussing wonderful things, civilizational continuity from Vedic times. But how do you are scholars, you are discussing here. But how do ordinary people get the ideas? He said, they get the ideas through me. When I dance, then they know. So dances, music, etc. should be integrated, arts. Humanities, we already have in IITs, for example, departments of humanities where generally 2 or 3 subjects, psychology, English, like this. I think there should be bilateral relationship between humanities and sciences, as the much maligned Delhi University Vice Chancellor tried to introduce a BTech in humanities. There has to be an integration between humanities and, you see, this segregation of knowledge, I think it affects the totality of education, and it hardens, doesn't really soften the mind as it should. In the same way, the prolixity of the humanities student, the looseness of thinking of the student will be corrected if he is given rigorous training, say compulsory, either in mathematics or in physics, something like that. So that's my next idea. And next, in social sciences, which have done the maximum damage to our Indian society, because through social sciences, the ethnographic thinking of the West, divisive, Tani Tirtham scholarship. The Brahmins call water Tirth, and non-Brahmins call it Tani. So, caste. And the caste, divides and so on and so on. This is ethnographic scholarship. And ethnographic research. Ford Foundation has been giving millions of dollars for ethnographic research in India. And you see today divided India ridden by conflicts. So this whole model of social sciences. And interestingly, we have a very powerful sociological tradition, Dharma Shastras. And people think Dharma Shastra is something ancient. In fact, there were Dharma Sutras, very ancient, Dharma Shastras. And then there were, in the Middle Ages, Nibandhas. They were particularly in major languages like Marathi, Kannada, Bangla, Telugu. Nibandha tradition, they were prose texts then, not Sutra, but prose texts. These are perpetual records of the changing society and social conventions. How is it that in the north you can't marry your first cousin, but in the south, in certain communities, you can marry, and it is accepted? It is accepted in the text. It has so there is immense variation of the Indian society is recorded there. And this is not a part of your study. This is only Durkheim. You go to any university, social department, Durkheim and, all those people. And M.S. Srinivasanji did a great damage to us by calling the process of upward mobility through English education Sanskritization. It was hardly Sanskritization. Sanskrit people are losing their Sanskritization. It was Anglicization. But instead of calling it Anglicization, he called it Sanskritization. So this Anglicization process comes through the theory. And I think we have to, again, not exclude that theory, but provide our theory. Indian theories are synthesizing transcendental theories. Our philosophies are also transcendental.
because our society for all the 5,000 years has been from the beginning pluralistic. We have not become pluralistic because invaders came and settled. People like the Jews came in 178 and they didn't come as invaders. The Christians came in 1st century AD. They didn't come. They came as persecuted people, even Christians. And the Baha'is and the Parsis, you see. So India, they came because they did not come and make us pluralistic. They came because we were a pluralistic people. And you see that variety, multiple variety, it is such a variety that Indian mind had to think of unifying it. So we have transcendental theories, synthesizing theories. I think that theoretical study should be built into your social sciences. Secondly, much of the space, you see, it is not reality-based, social sciences in India. We keep on discussing same things, nation, state, society, lot of research. Is India a nation? You know, like that. But many of the actual living issues of our society have been taken up by the NGOs. For example, water management, land management, women entrepreneurship, women self-employment, you know. And these subjects should now be part of social sciences in India. But they are not. So we have to add to the social sciences. Coming to engineering, I don't know whether Nachiketa ji will slap me right here or later. You see, the IITs and other major institutions, right from the beginning, have been focusing more on industrial technology. And you see, Pandit Nehru, thanks to Pandit Nehru, big industries, big dams, big 5-year plans, all those things. But then West chose industry and manufacture because they did not have food. Read 16th, 17th century, you know, corn laws, import and export, taxes on corn, and so on and so on. So they chose industry and manufacture because they had to sell something to get food. So the science converted to technology to provide food and comfort to the people living in those very, very cold countries, And then they manufactured. Now to manufacture, they needed raw materials. So they established colonies. And once they manufacture, they have to sell. And they wanted to sell Lancashire cloth in India. And they found that Dhaka makes much better muslins. How do you sell? So they destroyed our industry, our native industry. And they destroyed that and sold. This is the history of industry. We got into the idea that our mode of development is through industry. But sir, our engineering technology should have been on agriculture. We are the only country in the world with 12,000 kilometers of flat land immediately after you come down from the highest mountains in the world and irrigated by big rivers. You see, ideal conditions for food production. Instead of doing agriculture technology, nobody has paid attention to the bullock cart wheel. Nobody has improved the bullock cart. Nobody has paid attention to that when we water the fields in summer, so much evaporation takes place. How do you save water? But we learn from the West, sprinkling. Sprinkling we have learned. But we have not done anything to improve our own. In fact, sir, IIT should have done. Thirdly, our agricultural communities, they face several own problems. For example, in architecture, you can't, like South Korea, create new townships. You see, no Indian villager will agree to your pulling down his house and building a new one. He'll say, my grandfather stayed here. So what you need is not that architecture, but you need revision architecture. You revise it inside, but let the structure remain. And in the same way, you know, in villages, even today, many villages have a garbage-free lifestyle. There is no garbage. While I am in Delhi, me and my wife, we produce 2 big bags of garbage every day. So garbage-free lifestyle, it is endangered because with our education, you know, the
उपले बनाना is very important because lot of वो होता है, गोबर होता है, and the gobar is then being made into firewood, fire material, cooking material. उससे जो ashes होते हैं, that becomes compost for the fields, and there is a cycle, and there is no garbage. But now, the girls do not want to make upla, quite rightly. सर मन नहीं करता हाथ नहीं डालने का. तो अगर उपले नहीं बनाएंगे तो गोबर का क्या होगा? पंजाब फेस दिस प्रॉब्लम. पंजाब गौशालास हैव enormous amount of gobar, but they can't make uplas because you see that is not in the agricultural context. And one upla sells for 7 rupees in Punjab. If somebody were to make that, so what was needed, sir, in IIT was to develop a simple upla making machine. Simple upla making machine. I told you, we developed one in that rural village girls university. Simple. It had R&D problems because we are not a research university, we were not a technical university. But otherwise, the whole lifestyle will gradually change. Dairy will disappear, people will stop keeping buffaloes and cows, and the food habits will change. There will be no fresh milk, no fresh butter, and it will all packet and packages and cancer and all that. So that in Punjab, there is a train from Pathankot to Chandigarh. The name is Cancer Express. Cancer Express. So, these are long-term issues. And some policy people have to decide. What do you want to do? What do you want to do? You accept it in the same way. So this way, sir, industrial to agriculture. In medicine, sir, our 100,000 crores have been spent on allopathy, on AIIMS. And Modi ji, I disagree with Modi ji on 2 things. I admire him and love him. But 2 things, smart cities and creating 100 AIIMS. That's not the way to reach medicine to the common people. Ayurveda, even today, the masses of India, they go for the churan, they go for ark, they go for these things. And they are harmless, without side effect. The university, rural university I was in, it had an old Ayurvedic college. Sir, I will just take half a minute and finish. I am reaching the last point. You see, any patient who went to that, they had a hospital also, Ayurvedic. Any villager, and they are very healthy people, healthy. You go there, you find people healthy, you find people smiling and happy, healthy and happy. And that health and happiness has something to do with the garbage-free, lifestyle and food habits. You see, food habits. So a patient come, I tired of allopathy, could not take care of my stomach. I went there. 10 रुपए का पर्ची बना और 10 रुपए के पर्ची में उन्होंने डॉक्टर साहब ने spent 1 hour with me asking everything and then gave me medicine also, churan and this and that and this. And next time I went, 8 annas, 50 paisa. Again the same medicine. See? Now the same Haryana government, they opened a allopathic girls' college, 3 kilometers away, part of the university. What happened? I am now giving you actual data. The Ayurvedic Medical Hospital had 175 OPD patients every day. When the allopathic hospital opened, their OPD fell to 25. Everybody went there. But a year later, the OPD strength in Ayurveda again came to 200. Now 200, not 175. Reason? Those who went there, they found that the doctor doesn't listen to them. क्या बात है? What is the problem now? वो बताने लगते हैं, पहले cold हुआ था, फिर ये हुआ. Okay, नहीं. What's your problem now? That is the allopathic doctor. And लिख दिया 5 दवाई, बाहर ले लो सामने. Medicines are not reliable because duplicate, and in that remote area, very expensive. 5 दिन बाद आ जाना. 5 days later he says, हाँ बोलो. The doctor is already prepared
टू से कि और 5 दिन लो, हाँ बताओ क्या, बोले जी नहीं ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अच्छा ये जो है 5 दिन और ले लो, ये और एक ये और जोड़ लो। एंड दे स्पेंट मनी, द डॉक्टर लिसन, दे केम बैक। उसे तो अपने वो आयुर्वेद वाले अच्छे हैं, 1 घंटा आधा घंटा सुनते हैं, आपकी नब्ज देखते हैं, आपका आपका ब्रीदिंग देखते हैं, सांस देखते हैं, पूछते हैं क्या खाते हो, दिन में क्या खाते हो, सुबह क्या खाते हो, शाम को देने के। तो सर ordinary man cannot be served by AIIMS. And I think all medical colleges in India should have composite medicine system. Every person in medicine should be taught both Ayurveda and allopathy. Today, allopathic doctors have started prescribing Ayurvedic medicines. Standard, Himalaya Drug Company. It's a fact. So, that means that Japan and China, so you can verify this, sir, maybe, they have a composite medicinal system. They may even the Tibetan medicine, they incorporate. Herbal medicine is the fashion. So, sir, in medicine, I think this is a curriculum change, which I think we need. And finally, sir, I now to Sanskrit. The best students go to commerce, and the worst students go to philosophy these days. What will happen to this country? And the departments are being wound up. Sanskrit, worst students. And hardly sometimes 3, those who don't get admission anywhere. And what is being done? The departments have been asked to close down. Now this is bad. And no good American or British or European university ever shuts down a crucial department which is crucial to their culture and civilization, even if there are no students, but the departments are not shut down. Secondly, Sanskrit must reach the best students. And the way again, Nachiketa ji, is that you made Sanskrit learning part of your engineering discipline. You get the best students. You can do it through introducing courses in Indian knowledge, scientific courses, or somehow, once your best students start reading Sanskrit, Sanskrit will survive and flourish. Thank you very much. So I hope you got a peek view of into the brain of Professor Kapil Kapoor. There's a treasure of knowledge there, and you just saw a small glimpse of it. Especially for IIT teacher. Absolutely. Talking to him is always a humbling experience, and I mean it. Next, I will ask Shri Dinesh Kamatji, I must apologize, Shri Dinesh Kamatji, to come and share his thoughts. And and then we will talk. The worst student goes to Sanskrit. मैं संघ का प्रचारक हूँ, मुझे संस्कृत भारती भेजा गया। मैं साइंस का विद्यार्थी था। कभी भी मेरे जीवन में अहम कदापि मम जीवने संस्कृतं न पठितवान्। विद्यालये महाविद्यालये कुत्रापि केवलम् 8 वर्षपूर्वं संस्कृतभारतीं प्रविष्टवान्। श्रुत्वा भाषणं न तु पठित्वा न तु रटित्वा। रामः रामौ रामाः रटनमपि नास्ति, पठनमपि नास्ति। शिक्षणं संस्कारयुतं भवेत्। शिक्षणे भारतं भवेत्। तदर्थं शिशुशिक्षणात् आरभ्य राइट फ्रॉम केजी संस्कृतं सर्वत्र अनिवार्यं करणीयं। तद् सर्वकारीययोजनासु भवति वा न वा, न्यूनातिन्यूनम् अस्माकं हस्ते विभिन्न संस्थाः सन्ति। विभिन्न देशेषु अपि भारते अपि अस्माकं प्रभावः अपि अस्ति। मन्दिराणि चलन्ति, विभिन्न विद्यालयान् चालयामः, सामाजिक संस्थाः सन्ति। जाति संगठनं, क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, आर्य महासभा, आर्य समाज, एवं विभिन्न धार्मिक सामाजिक शैक्षिक सांस्कृतिक संगठनानि सन्ति। तेषां द्वारा
शिक्षणं शिशुशिक्षणं संस्कृते भवतु, संस्कृतम् एकविषयरूपेण, नाट् इन् संस्कृत मीडियम, किन्तु संस्कृतम् एकविषयरूपेण भवतु. संस्कृत टीचिंग शुड बी मेड सिंपल एंड अट्रैक्टिव. वयं प्रयोगरूपेण, यथा अद्य भगिनी उक्तवती, तत्र जयपुरिया भगिनी उक्तवती, तथा वयं पुस्तकानि, सरलपुस्तकानि, चित्रमयानि, वर्णमयानि पाठ्यपुस्तकानि कृतवन्तः. कलिका, लतिका, मालिका, वाटिका, गीतिका, मल्लिका, फॉर एवरी स्टैंडर्ड वयं कृतवन्तः. तादृशानि पुस्तकानि करणीयानि. इट शुड बी मेड अट्रैक्टिव. प्रथमं सर्वत्र वयं कर्तुं शक्नुमः वा? हम कर सकते हैं? हैं तो हाथ उठाइए, हाँ ओम बोलिए. उत्तमं. द्वितीयं, आधुनिक शिक्षणं विभिन्न विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु आधुनिक विषयाणां शिक्षणं दीयते. तस्मिन् शिक्षणे इन मॉडर्न स्ट्रीम, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड एनीथिंग, तत्र भारतीय कंटेंट, अस्माकं भारतीयानां द एंशिएंट साइंटिफिक हेरिटेज, ये भी थोड़ा एक 2-4 लाइन चित्र सहित. हमने एक साइंस इन संस्कृत नाम का एक एग्जीबिशन किया. 150 चार्ट्स, कई IITs में, IIMs में संस्कृत का किसी एक आर्यभट्टीयम, द वैल्यू ऑफ पाई, उसका एज 1500 ईयर्स अगो वो भी किया. उसका एक श्लोक वैल्यू ऑफ पाई का, संस्कृत श्लोक, उसका अर्थ और वैल्यू ऑफ पाई आधुनिक जो शास्त्रज्ञों ने कब किया है, इतना ऐसे 150 चार्ट्स साइंस इन संस्कृत हमने किया. ये एग्जीबिशन देखकर IIT में डिमांड आ गया. अभी IIT रूरकी में, कानपुर में, गुवाहाटी में, मुंबई में, दिल्ली में हमारा रेगुलर वीकेंड क्लासेस चलते हैं. शिक्षक आते हैं, छात्र आते हैं. IIT मुंबई में नाउ इट इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, संस्कृत इज टॉट नाउ. संस्कृत डिपार्टमेंट शुरू हो गया है. ऐसे संस्कृत सभी ऐसे विषयों में, मॉडर्न स्ट्रीम्स में संस्कृत का साइंटिफिक हेरिटेज क्या था, इसके बारे में थोड़ा जोड़ना चाहिए. पूरा ये करेंगे तो लोगों को नहीं बहु आधार कभी नहीं मिल सकता है, किंतु जो आधार है ऐसे विषय दे सकते हैं. दूसरा. तीसरा, विदेशेषु भारतीय छात्राणां कृते वयम् एकं प्रयोगं कृतवन्तः. अमेरिका देशे संस्कृत एज फॉरेन लैंग्वेज, SAFL, सेफल नाम का एक योजना हमने 3 साल पहले हमने शुरू किया. पहले वर्ष 10 छात्र थे, दूसरे वर्ष 22 छात्र हो गए, तीसरे वर्ष 50 हो गए. अभी 100 से भी ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं. धीरे धीरे ऐसे हम सभी देशों में भारतीय छात्रों के लिए फॉरेन लैंग्वेज एक तो पढ़ना ही है, स्पेनिश या जर्मन, फ्रेंच कुछ भी पढ़े, उस स्थान पर संस्कृत, उसके लिए आपको पाठ्यक्रम चाहिए, सरल पुस्तकें चाहिए. ये हम भारत से हम बना कर देंगे आपको. इसीलिए संस्कृत एज फॉरेन लैंग्वेज ये पढ़ाने, ये हम कर सकते हैं क्या. चौथा, इंडियन मिशंस जो हैं वो संस्कृत को पॉपुलराइज करने के लिए, संस्कृत सिखाने के लिए एक है ना, उन देशों में संस्कृत टीचर्स को अपॉइंट करें. इससे दे विल प्रोपेगेट संस्कृत, स्पोकन संस्कृत. वहाँ से हम शुरू करेंगे. 2 घंटा दीजिए, घंटाद्वयं ददातु, 10 दिवसेषु संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति. लक्ष जन, 90 लक्ष जनाः एतावत्पर्यन्तं 90 lakh people have attended the spoken संस्कृत कैंप्स. ऐसे विदेशी मिशन द्वारा भी स्पोकन संस्कृत सिखाने के लिए, संस्कृत पॉपुलराइज करने के लिए टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए.
सीबीएसई विद्यालय कई देशों में है, दुबई, अबू धाबी, ऐसे कई देशों में है। इन देशों में सीबीएसई विद्यालयों में हम केजी से संस्कृत शुरू करना चाहिए। वहाँ तो विरोध नहीं होगा किसी का भी, भारतीय लोग तो चाहते हैं, इसीलिए उन विद्यालयों में केजी से संस्कृत हो। जैसे ओमान में गया था, वहाँ देर आर 19 स्कूल्स, हाँ इंडियन स्कूल्स। एक विद्यालय में गया था, 10,000 स्टूडेंट्स, उसमें संस्कृत एक सब्जेक्ट है। ऐसे संस्कृत सभी सीबीएसई विद्यालयों में विदेशों में आवे। अगला, सर्वेषां कृते एतद् भारते अहं वदन् अस्मि, सर्वेषां कृते सामाजिकानां कृते संभाषण शिबिराणि, क्योंकि समाज में एक संस्कार का वायुमंडल आना चाहिए और संस्कृत इसके लिए एक बहुत अच्छा एक साधन है। इसीलिए घंटा द्वयम 10 दिनानां, किसी समय में it will be a non-formal education, non-formal education, ऐसे निःशुल्क संभाषण शिबिराणि, लक्ष शिबिराणि चालितानि, एतादृश शिबिराणि सर्वत्र, हमारा प्रभाव जहाँ जहाँ है वहाँ सभी ये संभाषण शिविर पॉपुलराइज करना चाहिए। जब संभाषण करने लगेगा उनको ही पढ़ने की एक मानसिकता बनते है, क्योंकि घर में भगवत गीता है, गीता प्रेस वालों ने दिया है, 1 रुपये में दिया है करोड़ों घरों में, किंतु वो समझ में नहीं आ रहा है। तमिल में, तेलुगु से, हिंदी से सब व्याख्या दी है, तो ये तो उनकी व्याख्या है। हमें श्री कृष्ण भगवान ने जो बताया है वो साक्षात, एवरीबडी वांट्स डायरेक्ट सनलाइट, नॉट द मिरर, द रिफ्लेक्टेड मिरर लाइट, नो, अनुवादित नहीं चाहिए, डायरेक्ट। इसीलिए उनको इच्छा पैदा होती है सीखने के लिए। इसीलिए अगला मेरा पॉइंट है, यानी संभाषण शिविर के बाद डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। स्टूडेंट्स के लिए अगले अलग कोर्स बनाएंगे, यूट्यूब में भी डालेंगे, और सामाजिक लोगों को, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, और कोई है, कोई भी हो सकता है, घर में बैठे बैठे दिन में एक 15 मिनट, आधा घंटा वो देख सकता है, पढ़ सकता है। ऐसे स्कीम अभी पढ़ सकता है, हमारे पास अब है, अब 8 भाषाओं में है, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, 8 भाषा में है। इस और 2 माह में बंगाली, असमिया, ओडिया, 11 भाषाओं में घर बैठे बैठे आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। दिन में 2 पेज पढ़िए, 6 माह का 4 कोर्स, प्रवेशः, परिचयः, शिक्षा, कोविदः, ये 4 कोर्स आप करेंगे, 2 साल में आप भगवत गीता, रामायण, महाभारत और स्तोत्र हम हर दिन पढ़ते हैं। किसी ने बताया जो मंत्र हम बोलते हैं वो समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आएगा। 4 कोर्स, ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, लोग भीत होते हैं, क्योंकि रामः रामौ रामाः, हे रामौ माम रक्षन्तु, संस्कृतात्, संस्कृत से मुझे रक्षा करो। इसीलिए व्याकरण नहीं है, साक्षात भाषा। मम नाम दिनेशः, भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम, भवतः, भवत्याः, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये कुछ बताना नहीं चाहिए। ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे डिस्टेंस एजुकेशन, ये एक सामाजिक, हिंदू लोग सभी इस एजुकेशन में भाग लें, ऐसे अभियान लेना चाहिए। एक अंतिमम, हाँ ना, हो गया, इतना ही, इतना ही। नमस्ते। अस्माकं सर्वेषां दायित्वं संस्कृतं केवलं पंडितानां न, शिवस्य जटायां गंगा यथा बंधिता आसीत् तथा संस्कृतं पंडितानां जटायां बंधिता अस्ति। वहाँ से बाहर लाने के लिए भगीरथ तपः करणीयः।
हम सभी ने मिलकर भगीरथ तपः करणीयः संस्कृतं केवलं पंडितानां न संस्कृतं सर्वेषां संस्कृतं सर्वत्र. I will request Dr. Chaturvedi ji just to make one small comment, because I think he wanted to make a comment. And then the last part is a small lecture, so that when we leave this room, we go with some concrete understanding of a very important term. There's one gentleman, Dr. Krishna Gopal ji, is waiting there. But so briefly, sir, and very briefly, and then we will request him. And नहीं अभी सर, नहीं सर, आई एम सॉरी, अभी नहीं सर, मेरा करबद्ध निवेदन है, अभी हम किसी को नहीं, क्योंकि नहीं सर, वी हैव टू लीव दिस रूम, नहीं तो हमको निकाल देंगे हम लोगों को. मेरे बहुत दो अच्छा, एक्सक्यूज मी, पंडित जी, एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन, it is my responsibility to make a decision. I am making a decision that we will do it this way. नहीं सर, हो गया. बहुत संक्षेप में आपके और बीच में, आपके और कृष्ण गोपाल जी के बीच में नहीं रहना चाहता. बहुत संक्षेप में 2 बिंदु निवेदन करूंगा. मान्यवर कपिल कपूर जी ने 2 बातें कही थी. एक तो उन्होंने कहा था कि रिसर्च के लिए फंड्स की बात है. मैंने जैसे पूर्व निवेदन किया था कि मैं एक रेगुलेटरी कमेटी, प्रोफेशनल कॉलेजेस रेगुलेटरी कमेटी का चेयरमैन के नाते से अनुभव किया, और मैंने उन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को बतलाया, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को, कि वो इंडस्ट्री के साथ लाइजन करें, और इंडस्ट्री के साथ लाइजन करने के बाद उनको इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, फंड्स भी मिलते हैं, मशीनरी भी मिलती है, और उनके छात्रों को एक्सपीरियंस भी मिलता है. उसके आधार पर वो एक्सपीरियंस छात्र उन इंडस्ट्रीज में खपते भी हैं, तो इस कारण से उनको एम्प्लॉयमेंट भी तुरंत मिल जाता है. दूसरी चीज़ मैंने उनको निवेदन की थी, वर्क हुआ है उस पर. एक इंस्टीट्यूशन ने, वहाँ के छोटे इंस्टीट्यूशंस थे, IIT जैसे संस्थाएं नहीं थी, 6-6 करोड़ रुपए इस रिसर्च के माध्यम से प्राप्त किए हैं एक इंस्टीट्यूशन ने. मैं निवेदन करूं दूसरा उसी प्रकार से, भारतवर्ष में लगभग उस समय मैंने 4 वर्ष पूर्व वर्कशॉप कराई थी, 22 ऐसी फंडिंग एजेंसी सेंट्रल लेवल पर थी जो उस प्रकार के रिसर्च के लिए फंड करती थी. जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो केवल लड़कों की फीस के आधार पर केवल अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, न वो उन फंडिंग एजेंसीज को प्रोजेक्ट बनाना देना चाहते हैं, और न इंडस्ट्री के साथ लाइजन करना चाहते हैं. ये 2 सजेशंस मेरे दृष्टि से निवेदन करने थे. धन्यवाद. Okay. So one more piece of information, we will have our first meeting, जो भी आप 3 महानुभावों ने बताया है, and then of course Dr. Shivan Kak, there will be groups constituted, and we'll have our first meeting on 25th, 26th, 27th December, है ना? So I'm giving you a concrete date. We have to just confirm it. Dr. Vishwanathan said that he'll confirm it with his office, and बाकी लोगों से भी मैं confirm, but these are the tentative dates, and through emails we will invite your suggestions. We will also say that if you are interested, only one person in only one group, then you express your interests, and then we will develop teams and we will work together. Now, I would request Dr. Krishna Gopal ji to kindly come and provide us with our parting thoughts. One, sir, आप लोग बैठिए please. नहीं sir, बैठिए. The session is same. One word which has been very significantly misunderstood, and this is an educational conference, is Hindutva. So I have requested him to talk for about 15-20 minutes and explain it to us, the meaning of the word Hindutva. Dr. Krishna Gopal. सभी को मेरा नमस्कार. हिंदुत्व के बारे में चर्चा होना बहुत आवश्यक है. हिंदुत्व को समझे बिना
और गहराई से समझे बिना इस कॉन्फ्रेंस का जो मूल उद्देश्य है वो अधूरा रह जाएगा। पश्चिमी जगत में रिलीजन नाम का जो शब्द है उसने बहुत भ्रम उत्पन्न किया। लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस रिलीजन वर्ड। भारत में ये शब्द नहीं था। भारत में उसका सिनोनिम संप्रदाय मानते हैं, लेकिन संप्रदाय हम उसका सिनोनिम नहीं मानते। भारत में पैदा हुए जितने भी संप्रदाय हैं वे सब संप्रदाय एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भारत में धरती पर जो संप्रदाय, पंथ, मत जो उत्पन्न हुए हैं वे एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते, हेय दृष्टि से नहीं देखते, इन्फीरियर नहीं देखते। उन सब के अंदर कोई ना कोई एक्सेप्टेबिलिटी वे देखते हैं। हर एक संप्रदाय एक दूसरे के प्रति समन्वय का रास्ता ढूंढता है। पश्चिमी जगत का रिलीजन ऐसा नहीं करता। भारत का धर्म एक रिलीजन नहीं है, भारत का धर्म एक संप्रदाय भी नहीं है। और इसलिए इस शब्द को समझना, गहराई से अनुभव करना बड़ा आवश्यक है। बंधुओं, कुछ लोगों का मत है एक शब्द तो ये 1000-1200 वर्ष पुराना है। ये बात सच है, 1000-1200 वर्ष। लेकिन ये सही बात है। ये प्रचलित अधिक हुआ तो 8वीं शताब्दी के बाद से ऐसा प्रचलित हुआ कि सारे देश ने इसको स्वीकार कर लिया। मेरे मन में एक इसको लेकर प्रश्न खड़ा हुआ तो मैंने कुछ बड़े विद्वानों से चर्चा की, तो मेरे मन में जो एक बात बैठी वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। इस्लाम का आक्रमण बड़ा खतरनाक था। इस्लाम के आक्रमण के बाद ऐसा लगा कि सारे देश की जो सर्व समन्वयात्मक प्रज्ञा है, जो सबको एसिमुलेट कर लेने का जो एक महान गुण है, वो भी कहीं कुंठित हो गया। समझ में नहीं आता था व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या किया जाए क्या न किया जाए। इस्लाम सबको निगल जाने के लिए तत्पर था। वो चाहे जैन थे, चाहे बौद्ध थे, चाहे सिख थे, चाहे आर्य समाजी थे, चाहे वैष्णव थे, चाहे शाक्त थे, चाहे कोई मत को मानने वाले थे, इस्लाम वॉज अ कॉमन एनिमी टू ऑल द रिलीजन्स ऑफ दिस मेन लैंड। सबको लगा क्या करे क्या न करे, कुछ समझ में नहीं आया। सामने खड़ा हुआ जो है इस्लाम है। हम कौन है, हमारी कॉमन आइडेंटिटी क्या थी, इसका क्राइसिस था। धीरे धीरे समझ में आया सामने खड़ा वाला इस्लाम मुसलमान है। हम कौन है, सबको लगा हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदू। वो मुसलमान है, हम कौन है, हम हिंदू है। तो नानक ने लिखा ना, ये हिंदू है वो तुर्क है। चैतन्य बोलते हैं ना, वो मुसलमान है हम हिंदू है। कबीर बोलता है ना, ये हिंदू है वो तुर्क है। एक क्लियर कट एक वर्टिकल डिवीजन हो गया। और डिवीजन ऐसा हुआ सारे देश में, सिंध और पंजाब से लेकर के और आसाम तक लोगों ने अपने आप को हिंदू कहना शुरू किया। हिंदू कहने में उनको अधिक सुरक्षा थी, हिंदू कहने में उनको अधिक आत्मविश्वास था, हिंदू कहने में उनको अधिक ताकत थी, हिंदू कहने में उनको लड़ने की इच्छा शक्ति भी अधिक थी, आत्मविश्वास था। और मैं समझता हूँ इसलिए ये शब्द अधिक पॉपुलर हो गया। वेद में नहीं है, गीता में भी नहीं है, उपनिषद में नहीं है, लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद तेजी से फैला। और इसलिए इस देश का एक कॉमन नाम हो गया। इस देश के रहने वाले हर एक संप्रदाय के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म जैसा हो गया, एक कॉमन अम्ब्रेला जैसा हो गया। उस शब्द के ऊपर ज्यादा नहीं जाते, लेकिन फिर भी ये शब्द जो भाव लेकर के खड़ा है, वो भाव क्या है। ये शब्द इस महान परंपरा को लेकर के खड़ा है, वो परंपरा क्या है। ये शब्द जिस दर्शन को लेकर खड़ा है, वो दर्शन क्या है, ये मौलिक बात है। और इसलिए इस देश में पैदा होने वाले जितने भी मत थे, संप्रदाय थे, विचार थे, दर्शन थे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए। और हमारे संविधान ने भी उसको स्वीकार किया। भारत के जो संविधान है, उसने जब हिंदू की परिभाषा करने का प्रयत्न किया तो उसको डिफाइन करना उसको बहुत कठिन हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिफाइन व्हाट द हिंदू मीन्स। They defined the Islam, they defined the Christianity, they defined the Jews, they defined Parsis, but they were unable to define this Hindu. And they mentioned the article and they said those who are not Muslims, nor Christians, nor Jews, nor Parsis, they all shall be considered as Hindu. Hindu was a block. लेकिन ये तो परिभाषा नेगेटिव है।
ये डेफिनेशन है जो नेगेटिव है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एंड रेस्ट ऑल दीज ऑल विल बी कंसीडर्ड एज हिंदूज। ये सच बात है। जिसकी डेफिनेशन होती है वो डिफाइंड होता है, उसकी बाउंड्री होती है। हिंदू वॉज बाउंड्रीलेस। इन्फिनाइट की कोई बाउंड्री नहीं है। जो इन्फिनाइट है उसको बांधना बड़ा कठिन है, कहां तक जाएगा, एंडलेस है, फुल स्टॉप आता ही नहीं। और इसलिए जो हिंदू का जो जर्नी है, हिंदू का जो यात्रा है, ये अनंत है, सनातन है, निरंतर है, फुल स्टॉप इसमें नहीं है। इसलिए इस हिंदू के मौलिक दर्शन को ये कहां से शुरू होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस हिंदूनेस, हिंदूडम। वी कैन नॉट से एज हिंदुइज्म, नो, हिंदूनेस और हिंदूडम या हिंदू धर्म। मेरे मन में आया, मैं इसको डिफाइन करने की छोटी सी कोशिश करता हूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, नॉट डिफाइन। इस देश में सनातन काल से, वैदिक काल से, ऋग्वेद के समय से एक मौलिक तत्व, मौलिक दर्शन इस देश में उत्पन्न हुआ। उस मौलिक दर्शन ने एक्सप्लेन किया, इस बात को साक्षात किया, अपने अंदर से अनुभूति किया। ये विद्वानों के द्वारा लिखित ये ग्रंथ नहीं थे। विद्वानों ने बड़े विद्वत्ता के साथ इंटेलेक्चुअल जीनियस के आधार पर ये ऋग्वेद लिखा, ऐसा नहीं था। दे विजुअलाइज, उन्होंने उसको अनुभूत किया, उसको साक्षात किया। हम कौन हैं, ये सृष्टि क्या है, मनुष्य क्या है, और हम में और अन्य मनुष्यों में, हम में और जीव में, हम में और सनातन इस प्रकृति में संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशन। और इस तत्व पर ये पहुंचे, हम सब के अंदर जो एक प्रकाश है, एक तत्व है, एक आत्मा है, एक जीव है, एक ज्योति है, वो क्या है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। हम सबको बांध करके रखता है, हम सब के अंदर है। और भिन्न भिन्न बातों से उन्होंने उसको कहा। कहीं इसको शिव कहा, जैसे यजुर्वेद में जब हम लोग शिव की उपासना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उसके 20 मंत्रों में हम बोलते हैं ये रुद्र है, आकाश में है, रुद्र है, समुद्र में है, रुद्र है, मनुष्य में है, रुद्र है, प्राणियों में है, रुद्र है, वृक्षों में है। उस रुद्र को हम नमस्कार करते हैं। कहीं इसको विष्णु कहा, कभी इसको ज्योति कहा, परब्रह्म कहा, ब्रह्म कहा, आत्मा कहा, कुछ भी कहा, लेकिन वो समान है, ये दूसरा तत्व है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सबके अंदर वो ईश एक है, दो नहीं है। जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोग, हिंदू अनेक देवताओं को मानता है, देवता अनेक है, अलग तत्व है। ईश्वर परब्रह्म परमेश्वर एक है और केवल एक ही है। हर एक हिंदू इस मौलिक तत्व को जानता है। देवता सैकड़ों हो सकते हैं, सूर्य देवता है, देता है, वायु देवता है, देता है, अग्नि देवता है, वो कुछ देता है। जो देता है वो देवता है, सबके अंदर विराजमान है। उस देवता को भी जो संचालित करता है वो परब्रह्म है, एक ओंकार है। हिंदू की एक सनातन मौलिक कल्पना है ये, और ये केवल कल्पना नहीं है, ये अनुभूति है। और इस अनुभूति पर जब साधना करते हुए आगे व्यक्ति बढ़ता है, उच्च अवस्था में, आध्यात्मिक अवस्था में आगे बढ़ता है, तो रियलाइजेशन होता है हाँ कुछ एक है। माता और पुत्र के अंदर ऐसी एकता है, वैसी उसको ग्रामवासियों के अंदर लगती है। सबके साथ वो एकात्म भाव की साधना करते आगे बढ़ता है, उसको अनुभूत कर लेता है। और इसलिए सबके अंदर का जो आत्मा है वो समान है, छोटा और बड़ा नहीं। ये दूसरा सिद्धांत उसमें से निकल करके आता है। ये एक मौलिक जो कंसेप्ट है, एंड दैट इज द प्रोलिफरेशन ऑफ दिस मौलिक कंसेप्ट। जो एक मौलिक सिद्धांत है, मौलिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसका प्रोलिफरेशन होता है और बोलता है समानम सर्वभूतेषु। ये ब्राह्मण के अंदर का आत्मा, शूद्र के अंदर का परमात्मा, ये अमीर का परमात्मा, उसके अंदर का आत्मा, या गरीब का, ये विद्वान का या निरक्षर का, भारतवासी के अंदर रहने वाला परमात्मा और अमेरिकन के अंदर का परमात्मा, आत्मा, ये अलग अलग नहीं है, छोटा और बड़ा नहीं है। समानम सर्वभूतेषु एक ऐसा दूसरा सिद्धांत था
जिसने सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस थे वो एबॉलिश कर दिए, खत्म कर दिए। एक तीसरा सिद्धांत इसमें और आगे निकला, जब मेरे अंदर का आत्मा, आपके अंदर का आत्मा, उनका आत्मा समान है तो फिर क्या है, हमारे अंदर का एक साम्य है, हमारे अंदर का एक एकता है। वो एकता है तो मैं उसकी बात मानूं, उसकी बात सुनूं, उसकी बात जानूं, उसकी चिंता करूं। और इसलिए दूसरे किसी भी प्राणी को कष्ट होता है, वो भगवान को कष्ट होता है, ईश्वर को कष्ट होता है, ये तीसरी बात निकली। और इसलिए अनेकों ग्रंथों में, सब ग्रंथों में, भारत के किसी भी संप्रदाय के ग्रंथ में एक ही बात कही गई है, वो यह है सबके सुख की कामना करो, सबके सुख की कल्पना करो, किसी के भी हिस्से को अलग नहीं करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये इसी देश के प्रत्येक संप्रदाय का कंसेप्ट है। वो सिख है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, आर्य समाज है, लिंगायत हैं, शैव है, वैष्णव हैं, वो आसाम के हैं, चाहे तमिलनाडु के हैं, एक ही बात बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये मौलिक बात इसी देश का संप्रदाय बोलता है, भारत के बाहर का संप्रदाय नहीं बोलता। भारत के बाहर के जमीन पर, भूमि पर उत्पन्न हुए पश्चिम के जो सेमेटिक रिलीजन्स है, वो बोलते हैं मेरे संप्रदाय के लोगों को हेल, वो हेवन, और मेरे संप्रदाय के बाहर के लोगों को हेल, ये पक्का। मेरे संप्रदाय के लोगों को स्वर्ग या जन्नत, बाकी के लोगों को दोजख, पक्का। ये जो डिक्लेयर कर रहे हैं, ये मेरे बाड़े की जो भेड़ है ये जाएगी बैकुंठ को, बाकी के भेड़ जो कहां जाएगी, नरक में जाएगी, अनंत काल तक नरक में। ऐसा नहीं। और इसलिए भारत में पैदा हुए संप्रदाय इस मौलिक दर्शन को मानते हैं। मैं आसाम में था तो 42 जनजातियों का सम्मेलन था, जनजाति के लोग, ट्राइब्स, ऑल द ट्राइब्स केम टुगेदर and we asked several questions to those tribal men. And we asked them, what is your way of worship? आप वर्शिप करते हैं तो क्या तरीका है? And what you pray to the God? आप क्या मांगते हैं, क्या बोलते हैं? Wonderful answers were there. आश्चर्यजनक उत्तर थे। वो बोलते थे हम प्रेयर में मांगते हैं मेरा घर परिवार अच्छा रहे, मेरा गांव किसान खेत खलियान अच्छा रहे, और क्या मांगते, हम चाहते सारे दुनिया के लोग अच्छे हो। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः वो नागालैंड तक है। वो मिजोरम के ट्राइब जब भी क्रिश्चियन नहीं बने ना, वो बोलते हैं सर्वे भव, ये मंत्र नहीं जानते। वो अरुणाचल के ट्राइब अभी ईसाई नहीं बने, वे बोलते हैं हम भाई जब पूजा करते हैं, करते करते अपने गांव, जानवर, खेती खलियान सबके बारे में अच्छा बोलते हैं। बाद में हम कहते हैं सारे दुनिया के जानवर अच्छे हो, सारे दुनिया के लोग अच्छे रहे। व्हाट इज द यूनिकनेस? वो काशी के ब्राह्मण लोग हैं, अच्छा मंत्र बोलते हैं, कांची के अच्छा बोलते हैं, अभी हमारे दिनेश कामत थे अच्छा मंत्र बोलते हैं, जानते हैं। वो क्या जानते हैं? ये जो कॉमननेस है इन आइडियल्स के लिए, इन सिद्धांतों के लिए, इन प्रिंसिपल्स के लिए, ये कैसे आई? और ये पहली बात, ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी और एक। क्रमांक 2, वो समान और सबके अंदर। क्रमांक 3, दुनिया के सब लोग, सब व्यक्ति, सब जीव, जीव ही नहीं अजीब भी शांत रहे, आनंद से रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसमें केवल प्राणियों के लिए नहीं है, सब जो भी कुछ है, वृक्ष भी, सभी। ये 3 मौलिक बातें आधार बनी। एक चौथी बात इसमें से और आगे बढ़ी। मान लो कल्पना करें मेरा मित्र है, हमारे ऋषियों को मालूम था ये एकता का सूत्र हम दे तो रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क जो मनुष्य का जो है बहुत क्रिएटिव है, नए नए विचार देगा। नए नए विचार आते ही अपने अपने विचार को लेकर के जिद पैदा होना, यह मनुष्य के मस्तिष्क का स्वाभाविक गुण है। मेरा विचार सच, मेरा विचार ठीक, मैं कहता हूं ठीक, इसको लेकर के एक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। चौथा मंत्र दिया, और चौथा मंत्र देकर के ऋषियों ने अपने उस उषा काल में, वो संस्कृति का जो प्रारंभ था ऋग्वेद में, उस समय अपने ही मेन गेट पर लिख करके जोर से ऊंचे से लगा दिया, बड़ा बड़ा, वो परम सत्य एक है
कितने भी रास्ते से बोलिए, कितने भी मुंह से बोलिए, कितने भी प्रकार से बोलिए, उस एक परम सत्य की ओर ही सब जाएंगे। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसने सारे डिस्प्यूट खत्म कर दिए, सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, डिफरेंसेस थे, उनके अंदर एक यूनिकनेस स्थापित कर दी। एक्सेप्टेबिलिटी की अनंत सीमाएं इसने खोल दी। एकम सत विप्र में ये दृष्टि जो है एकम की हो गई, और बहुधा का ये हृदय हिंदू समाज का विस्तीर्ण होता चला गया। हिंदू समाज का हृदय इतना विस्तीर्ण हो गया, इसका आंगन इतना बड़ा हो गया, ये किसी भी विरोधी व्यक्ति को, समाज को, विचार को अपने अंदर समाहित करने के लिए संकल्पित हो गया। इसका आंगन अनंत दूरी तक चला गया। दुनिया का कोई भी विरोधी से विरोधी समाज आकर के इसमें डूब जाए, उसको एक्सेप्ट हम कर लेंगे। ये उदार हृदय इस हिंदू समाज का इस एक वाक्य ने बना दिया। अनेक विविधताओं के एसिमिलेशन की गारंटी दे दी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती नाम का मंत्र देने वाले ऋषि के प्रति हमारा विश्वास और श्रद्धा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी जितना हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। हमारे देश में भाषा को लेकर झगड़ा नहीं होता, हमारे देश प्रांत को लेकर के झगड़ा नहीं होता, हमारे देश पंथ और संप्रदाय को लेकर के झगड़ा नहीं होता। अनंत एक्सेप्टेबिलिटी है। इसका आधार ये मंत्र है जो ऋग्वेद का ऋषि लिख करके रख गया है। वो परम सत्य एक है, ध्यान में रखना। तुम तमिल में बोलो, कन्नड़ में बोलो, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, किसी भाषा में बोलो, चिंता नहीं करना। तो ये पूजा करो, वो पूजा करो, चिंता नहीं करना। ब्रिटेन के एक मिनिस्टर भारत में आए थे और वो कह रहे थे, अभी 4-5 वर्ष पूर्व की बात है, हम भारत को छोड़ करके जा रहे थे, हम सोच रहे थे भारत टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। हमारी कल्पनाओं में वो अब नहीं है। हम देखते हैं भारत तो टुकड़ा नहीं हुआ। उनको वो मालूम है क्योंकि उनके यहाँ ऐसा बांध करके, जोड़ करके आत्मीयता के सूत्र वाला कोई संस्कार ही नहीं है। और इसलिए आयरिश बोलने वाला कैसे भी इंग्लिश के साथ नहीं रहना चाहता, फ्रेंच वाला वो जर्मन के साथ रहना नहीं चाहता, वो पुर्तगीज वाला वो स्पेनिश के साथ रहना नहीं चाहता, वो इटली वाला किसी के साथ रहना नहीं चाहता। भाषा को लेके झगड़ा, अपने रिलीजन को लेके झगड़ा। वो बंगला बोलता है इसलिए पाकिस्तान के रहना नहीं चाहता, अलग देश बनाता है। ये एक्सट्रीम इंटॉलरेंस है वो पश्चिम के जो सेमेटिक रिलीजन्स है वो पैदा किए। भारत के इस एक वाक्य ने सारे ऐसे लोगों को मिला करके एक कर दिया। हिंदू इसमें से उत्पन्न हुआ एक दर्शन है। इस दर्शन ने इस देश में अपना प्रभाव उत्पन्न किया और दूर दूर तक इस विचार को लेकर के ये दर्शन फैल गया। इस दर्शन में से हर एक संप्रदाय कैसा भी आगे बढ़ सकता है और इसलिए ये एंडलेस जर्नी है। गांधी जी बोलते हैं सत्य की अनंत खोज का नाम हिंदुत्व है। अनंत यानी चलता रहेगा, इसमें फुल स्टॉप नहीं है। कोई भी आके नई बात जोड़ता है। ऋग्वेद की या यजुर्वेद की बातों को अनेक प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उन सब की एक्सेप्टेबिलिटी है। और इसलिए हिंदू धर्म को, दर्शन को मानने वाले लोग ये बाड़े नहीं बनाते, सारे दुनिया के लोगों में डिवीजन नहीं करते। ये लोग सर्व समन्वयात्मक बुद्धि और प्रज्ञा रखते हैं। कितने भी विरोधों में सामंजस्य का मार्ग ढूंढते हैं। कितनी भी कठिनाई आती है, मौलिक धर्म तत्व को छोड़ते नहीं, प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं। ये केवल विश्वासी मत ये नहीं है, हमारे जिज्ञासा, प्रश्न और शंका इसको सदैव अनुमति दी। और आश्चर्य की बात ये थी, जब जब इस समाज में इस विचार दर्शन के मानने वालों में विकृतियां आईं, तब तब हमेशा एक नया ऐसा महापुरुष खड़ा होता था जो इस सारे समाज को फिर से अपने इस मौलिक तत्व की ओर पकड़ करके ले आता था, फिर खूंटे से बांधता था। नया संप्रदाय चला करके मौलिक दर्शन से दूर नहीं जाता था। वो चाहे बुद्ध थे, चाहे महावीर, वे शंकर थे, चाहे नानक, वो चैतन्य थे या ज्ञानेश्वर, वो आसाम के शंकर देव थे, तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर,
वो कोई रहे हो, आप ध्यान से देखिए, मौलिक दर्शन के पास लेकर के समाज को आ जाते हैं, फिर ही उस दर्शन से बांधते हैं, डिवीजन नहीं करते कभी भी। कुछ लोग समाज में डिवीजन करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा लगता है हिंदू बट जाएगा, लेकिन ध्यान में रखिए, कभी नहीं बटा, कभी बटेगा नहीं, क्योंकि मौलिक सिद्धांत एक है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, इसके दार्शनिक तत्व को हम लोग गहराई से समझें। संप्रदाय, भाषा, मत, पूजा की पद्धतियां, आचरण और व्यवहार ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारे विश्व को एक छाते के नीचे लाने का प्रयत्न हिंदुत्व ही कर सकता है। सबके सुख की कल्पना हिंदुत्व ही कर सकता है। हजारों संप्रदायों को आनंद के साथ अपने आंगन में संभाल करके रखने का एक आशीर्वाद इस हिंदुत्व को ही परमात्मा ने दिया है। इसलिए जब हम हिंदुत्व कहते हैं, हम सेक्टेरियन नहीं हैं, हम डिविजिव नहीं हैं, हम सारे विश्व नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के एकात्म स्वरूप का दर्शन करते हुए हम यहाँ खड़े हैं। हजारों साल से यह दर्शन है। हिंदुत्व नाम नया हो सकता है, आगे हो सकता है और भी कोई नया नाम मिल जाए, उसकी चिंता मत करिए, लेकिन उसका दर्शन वो सनातन है, वो चिरंतन है, वो अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल तक संपूर्ण विश्व को सुख, शांति, प्रेम, सौहार्द और दया, करुणा का संदेश देने का दायित्व परमात्मा ने दिया है। एंड दिस इज अ डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर सोल्जर्स। मैं कहता हूँ इतना ही आपके सामने इस हिंदुत्व के दर्शन को रखने का मैंने प्रयत्न किया। नमस्कार। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।